understood this diagram? What is a clean development mechanism? When Annex 2 country in non-Annex 1 country, it implements any project, that is clean development mechanism. The emissions that are reduced are certified by the board of clean development mechanism, and that is known as certified emission reduction, which can be bought and sold. The buying and selling of the certified emission reductions on the stock market on the basis of market mechanism is known as carbon trade and carbon credit. What is joint implementation? When two non-Annex 1 countries or when two Annex 1 countries will implement, two or more Annex 1 countries will implement a project only in their region, not in the non-Annex 1 country, it is known as joint implementation. So Kazakhstan, Russia, जापान, फ्रांस डिसाइड कि नहीं, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी देनी नहीं है, ना पैसे देने हैं, क्योंकि बाद में हमें ही वो खरीदना है, मतलब हम ही टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम ही पैसे दे रहे हैं और एमिशन उसके कारण रिड्यूस हो रहा है, वही हम खरीद रहे हैं. See, now this obviously this money does not come free of cost, it comes as a soft loan. Technology does not come free of cost, it comes at a price. ऐसा नहीं कि free में दे रहे technology, it will come at a price. But still, they don't want to give the technology. Rafael is not giving free of cost. India wants to give the price, but they don't want to give that technology. Fine. So, but when they decide not to give the technology and do only in these countries, then it is joint implementation. Because it is legally binding, carbon trade, carbon credit cannot be done in the joint implementation. Getting it? So, what is certified emission reductions? Certified emission reductions are the type of emission units or type of carbon credits, क्या है? Carbon credits है because you are going to buy and sell them, are the type of carbon credits issued by Clean Development Mechanism Executive Board, for emission reductions that are achieved by CDM projects. CDM मतलब Clean Development Mechanism projects. फिर से पढ़ो definition and ask me if there is any doubt in that. By CDM projects. Annex 2. वैसे Annex 1 को सेल कर सकते हैं, बट कजाकिस्तान और यूक्रेन do not have money only to buy. Technically it is to the Annex 1 countries, but in reality they don't have any money to buy. Fine? Any doubt here? Everyone? Now this certified emission reductions can be purchased by Annex 1 countries. Purchased by Annex 1 countries. क्यों? To comply with their target. This trading which occurs at market price, under commodity exchanges, is known as carbon trade and carbon credits.
is known as carbon trade. Sorry, under is known as carbon trades. Is known as carbon trades. Trade. Carbon credit is a very general term. Carbon credit is a very general term. किसके लिए? कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस किया ऐसे दिखाया is a very general term for any tradable certificate. For any tradable certificate representing the right to emit 1 ton of CO2, representing the right to emit 1 ton of CO2, right to emit 1 ton of CO2 or any equivalent greenhouse gas, CO2, carbon dioxide, or any equivalent greenhouse gas. Remember, this can occur only between Annex 1 and non-Annex 1 countries. So carbon trade, carbon trade can occur only between Annex 1 and non-Annex 1 countries. Annex 1, technically Annex 1, but in reality Annex 2 only. I'll explain you why this difference comes between Annex 1 and non-Annex 1 countries. See, technically definition कहता है between Annex 1 and non-Annex 1 countries carbon trade should occur. But what happens in reality, Annex 1 में there are some OECD members and non-OECD members. अब कजाकिस्तान जैसा non-OECD members, though it wants to buy carbon trade, it does not have enough money to buy. So reality में it happens between Annex 2 and non-Annex 1 countries. But technically Annex 1, carbon trade and clean development mechanism only between Annex 2 and non-Annex 1 countries. Clean development mechanism. Understanding? But buying and selling, Kazakhstan के पास पैसे है, it can buy also carbon credits. Nobody is stopping them. But obviously Kazakhstan does not have money to invest in India for this. So clean development mechanism between Annex 2 and non-Annex 1. Carbon trade between Annex, non-Annex 1 and Annex 1 countries. Joint implementation is a flexible mechanism which allows the country with emission reduction or limitation commitment, which allows the country with emission reduction or limitation commitment. मतलब it is nothing but what is this? This is which countries have emission limitations? Annex 1 nations. Emission reduction or limitation commitments. मतलब जिसके ऊपर क्योटो प्रोटोकॉल इज बाइंडिंग. आई एम जस्ट गिविंग यू अ टेक्निकल वर्ड फॉर दैट फ्रॉम यूएनएफसीसी का वेबसाइट. फाइन. इन द ब्रैकेट Annex 1 nations. Annex 1 nations where two or more Annex 1 countries, can invest in project to reduce greenhouse gas emissions. In any other Annex 1 country. In any other Annex 1 country. In any other Annex 1 country. Understanding this?
Don't do this from UNFCCC का website. It is given in very confusing manner. Understanding? Clean development mechanism यहाँ पे. So therefore certified emission reduction कि कितना emissions have been reduced. Fine? जितने emissions have been reduced, that can be sold or bought. That can be sold here or that can be bought by these countries. So उसको हम कहेंगे carbon trade. In the joint implementation, only these countries will come together and they will say, देखो हमने हमारा टारगेट फुलफिल किया. इसमें there is no question कि ये इनको किसको बेचेंगे. They cannot buy or sell. They are reducing their own commitment. But maybe France and Germany will come together to save the cost and do a project. It is known as joint implementation. Understood? Everything? What is the difference between clean development mechanism and joint implementation? Everyone? Any doubts here? Paris Agreement. Unlike the Kyoto Protocol, Paris Agreement does not distinguish between developed and developing nations. Developed and developing nations. What is the agreement? Can someone tell me what is the agreement? What is the overall agreement? To reduce the global warming by 2 degrees Celsius and try to limit the global warming to less than 1.5 degrees Celsius. So Paris Agreement is an agreement between the countries. To limit the global warming by 2 degrees Celsius, below 2 degrees Celsius, above the pre-industrial level. They have a cut-off date. Maybe 1850 mein the average temperature of the world was 21 degrees Celsius. So their overall agreement is to not to allow it to increase by 23 degrees Celsius above the pre-industrial level. Fine. Second, pursue the efforts. 3 है goals. So एक है कि try करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस से, but 2 degree Celsius is not going to enough. See, if the temperature increases by 2 degrees Celsius, sea level will rise by, if the temperature increases by 1.5 degrees Celsius, sea level is going to rise by 0.77 meters. And for every 0.1 millimeters, or 0.77 meters, so for every 0.1 meter rise in the sea level, 10 crore people will be displaced. Right? And iske baad, if you increase it to 2 degrees Celsius, for every degree Celsius, sea level is going to rise by 0.1 meter more. So agar 2 degrees Celsius hai, to humanity khatam by 2022. This is the reality. If the temperature increases, global average temperature increases by 2 degrees Celsius, matlab the India mein temperature will increase by, average temperature will increase by 6 to 7 degrees Celsius. Matlab summers mein heat waves will increase to जो अभी heat waves are going to increase. Imagine what will happen to the human beings at 65 to 70 degrees Celsius. So ये तो एक average है 2 degrees Celsius,
बट उसका इफेक्ट्स विल बी मोर. सो ये जो लू जो चल रही है अभी 40-45 डिग्री सेल्सियस, इट इज गोइंग टू राइज टिल 2035 तक. अगर हमने कंट्रोल नहीं किया इंडिया में, वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लू टेम्परेचर्स ऑफ 65-70 डिग्री सेल्सियस. इसलिए इंडिया इज डूइंग सो मच टू कंट्रोल, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल टू स्टे इन इंडिया. नॉर्थ इंडिया, फिर कहाँ पे जाओगे आप? पेनिनसुलर इंडिया में, बट वहाँ पे राइज इन द सी लेवल होगा. वहाँ से लोग कोस्टल सिटीज से सब जाएंगे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया यू ऑलरेडी नो इज ड्रॉट प्रोन. It is a drought prone. So India as such will not remain. So don't go by ये क्या 2 डिग्री सेल्सियस. This is a very average view of 2 डिग्री सेल्सियस. Fine. नेपाल खत्म because of avalanche. Maldives खत्म because of avalanche, because of rise in sea level. श्रीलंका खत्म. Fine. So this is the region. Therefore 2 degree Celsius is very, therefore second goal is very important. Pursue the efforts to limit the temperature increase to 1.5 degree Celsius, to 1.5 degree Celsius. And lastly, generally we miss this, but this is a Paris Agreement ka, strengthen the ability of the countries to deal with strengthen the ability of the countries to deal with strengthen the ability of the countries to deal with impacts of climate change, to deal with impacts of climate change. In the Paris Agreement, each country commits known as intended nationally determined contributions. Intended nationally determined contributions. Intended nationally determined contributions, which are legally binding. Which are legally binding. तो क्या क्या है इंडिया के एनडीसीज? रटे होने चाहिए. व्हाट आर इंडियाज एनडीसीज? So India's NDCs are one. Reduce the emission intensity. NDCs, nationally determined contributions, are 1. Reduce the emission intensity per unit GDP by 33 to 35%. एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट जीडीपी, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड एक जीडीपी को लगता है, उससे हमें हर एक जीडीपी के लिए जो भी जीडीपी, दैट इज व्हाट एवर इज इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हाउ मच इट इज, विल टेक $1,000. सो $1,000 को बनाने के लिए इफ वी रिक्वायर 100 यूनिट्स ऑफ CO2, वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट बाय 33%. सो इट विल कम टू समवेयर अराउंड 67 यूनिट ऑफ CO2. सो 8% अगर हमारा जीडीपी है, वी आर गोइंग टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी बाय सो मच परसेंटेजेस. फाइन. पर यूनिट जीडीपी बाय 33 to 35%. 33 to 35%. बट इंडिया का क्रिटिसिज्म है नेक्स्ट लाइन, बाय 33 to 35% बिलो 2005 लेवल्स. बाकी की कंट्रीज कह रही है बिलो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, हम कह रहे हैं बिलो 2005 लेवल्स. बिलो द 2005 लेवल्स बाय 2030. बाय 2030. बोथ का रेफरेंस पीरियड इज दिस प्री इंडस्ट्रियल लेवल. मतलब
we have to limit it to 23 degrees Celsius, but we'll try to limit it to 22.5. If we limit it to 22.5, we'll be very happy. That is the second. Fine. But global warming is reality, ये accept कर लिया. मतलब ऐसे नहीं कोई कह रहा है कि we'll try to limit it only to 21 degrees Celsius. Global warming is reality, इसलिए third goal है strengthen the capacity of the countries to adopt to the climate change. Fine. This is the first. So second is increase the share of non-fossil fuels. Increase the share of non-fossil fuels in the power generation. Non-fossil fuels in the power generation to 40% by 2030. To 40% by 2030. मतलब जो भी फॉसिल फ्यूल्स, जो भी पावर होता है उसमें से 40% शुड कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स. अभी कितना हो रहा है? अभी 30% है. अभी 30%. उसमें से यू आर सेइंग ओनली अबाउट सोलार. न्यूक्लियर का कितना है? आई एम गिविंग यू, ये सब याद नहीं रखना है. आई एम जस्ट गिविंग यू इन इंडिया. Tell me, arrange them in the descending order from highest to lowest in the power generation in India. सबसे ज़्यादा, उसके बाद nuclear. So this is how the India's installed power capacity is from. Nuclear is 5%. कितना है nuclear? 1% नहीं है. So सबसे ज़्यादा power comes from hydro. उसके बाद from solar. उसके बाद from wind. उसके बाद from and third is, नहीं उसमें ही ब्रैकेट में लिखना, therefore Indian government has set a goal. Indian government has set a goal to generate 175 gigawatts of power from renewable power. 175 gigawatts of renewable power. 175 gigawatts of renewable power by 2022. By 2022. And third goal is to create additional carbon sink. To create additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide. 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide. Of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide by 2022. By 2022. By 2022. अब some of the factual data you take down only for prelims. Coal, 57% of energy in India comes from coal. 57% comes from coal. 13%
comes from large hydropower, मतलब large dams. 7% comes from gas. 7% comes from gas, and 1.97% comes from nuclear. India is the 7th largest producer of hydropower in the world. Producer of hydropower in the world. मैंने दिया है कितना है विंड में इंडिया का रैंक. Have I given you earlier? India is the 4th largest wind power country. 4th largest wind power country. विंड पावर कंट्री. सबसे ज़्यादा स्टेट विंड पावर में तमिलनाडु. तमिलनाडु. जनरेशन तमिलनाडु. पोटेंशियल गुजरात. जनरेशन तमिलनाडु. 7000 मेगावाट्स, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं. सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र 4000 मेगावाट्स. थर्ड नंबर पे गुजरात 3400 मेगावाट्स. फोर्थ नंबर पे राजस्थान. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान. Books are saying Gujarat because till that time this plant was not active. Mupandal. Mupandal wind farm. Mupandal wind farm in Tamil Nadu. In Tamil Nadu is the second largest wind farm in the world. Is the second largest wind farm in the world. Is the largest, second largest wind farm in the world. Largest, China. Largest is China. Fine. कोई करने की ज़रूरत नहीं, ये सब recent data है. Fine. So this is the most updated data from the Ministry of Power and Renewable Resources 2018, 31st May 2018. अब next change होगा ये data 31st May 2019 को. Fine. So don't go by test series. जो भी test series के answers है, this is the latest data you are having. Second largest wind farm in India is Jaisalmer Wind Park. Is the Jaisalmer Wind Park. Jaisalmer Wind Park. Obviously, state is Rajasthan. $175 gigawatts का टारगेट है. Have you understood the 3 targets? 33% से emission intensity कम करनी है. 40% should come from non-fossil fuels, and third is afforestation. Afforestation कितना? So that it can remove 2.5 to 3 million tons of carbon dioxide. Fine. These are the 3 targets. Now again some of the factual data, that is India is going 175 gigahertz में से how much is the target of solar? 100 gigawatts by 2022. We are 175 gigawatts में से India wants to tap the solar energy. So one factual data again, the National Solar Mission. National Solar Mission is an ambitious program. With the initial target कितना था मनमोहन सिंह के टाइम में समय 20 गीगावाट बाय
2022 अब कितना है नरेंद्र मोदी के समय 100 gigawatts by 2022 is an ambitious program which tries to with a target of 100 gigawatts by 2022 100 target is 100 gigawatts by 2022 should I repeat again national solar mission target is 100 gigawatts by 2022 objective to make India world leader in solar energy world leader in solar energy itna 5 times increase is it achievable yes the present government is doing enough work कि ये अचीवेबल हो जाएगा इंडिया विल बी डूइंग दिस मतलब दिस इज अ टारगेट जो क्रिटिसाइज किया जाता है जुमला दिस इज नॉट ए जुमला राइट मीन्स आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस गवर्नमेंट वो आई एम नॉट कंसिडरिंग कि पहले का क्या था दिस इज एन एम्बिशियस टारगेट एंड बाय द वर्क कल्चर ऑफ मोदी ही इज मेकिंग श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू मीट द टारगेट वी आर गोइंग टू फुलफिल द थर्ड टारगेट ऑल्सो इसलिए वी हैव वन द बॉर्न चैलेंज बॉर्न चैलेंज इज फॉर अफॉरेस्टेशन सेकंड टारगेट में दिक्कत है सेकंड टारगेट बट द नितिन गडकरी इज फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक कार्स बट प्रॉब्लम उसमें यह है कि इलेक्ट्रिक कार के चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है that is going to be a problem we don't have infrastructure otherwise india is on the course of meeting uska nationally determined contributions the first country in the world jo apne nationally determined contributions meet kar degi means india is working really hard on the renewable energy you go on the instagram page or the facebook page of WTO उसके ऊपर एक पोस्ट आता है एवरीडे रिगार्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी अब मत करना एंड उसमें सिर्फ तारीफ हो रही है इंडिया की एंड इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु की getting it so India is going to meet the target the problem is only of second target जिसके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल था in down to earth but that article was not because of lack of government intention the problem is we don't have charging stations and second is electric cars के लिए चार्ज भी अगर करना है when we establish the charging stations we are not China कि हम फोटोवोल्टिक सेल्स से रास्ता बना लेंगे चाइना ने क्या किया है पूरा रास्ता बना दिया है फ्रॉम द फोटोवोल्टिक सेल्स सो जिससे सोलर सेल्स है उससे पूरा रोड है एंड दैट रोड विल बी चार्जिंग द व्हीकल्स फाइन we will be still burning the coal somewhere else to charge the vehicles so 40% electric vehicles diesel petrol कम कर दोगे but the coal second thing is कि अभी गाड़ियों के कॉस्ट सिर्फ 30 से 40 हज़ार बढ़ गया क्योंकि इंडिया में एमिशन नॉर्म्स आए BS6 नॉर्म्स प्लस क्रैश टेस्ट नॉर्म्स आए जो मारुति को क्रिटिसाइज किया जाता है टिन का डब्बा मारुति मेक्स इट बिकॉज पीपल वांट इट नोबडी सेज कि हाउ मच इज द यूरो एन कैप लोगों का क्या होता है कितना एवरेज देती है फाइन सो दैट इज आवर प्रॉब्लम एंड व्हेन द मारुति इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑब्वियसली इंक्रीजेस एंड द डिमांड गोज डाउन फाइन सो दैट इज आवर प्रॉब्लम वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द सेफ्टी वी आर कंसर्न्ड विद द माइलेज नेक्स्ट इज Why I am telling you all this? Because if you remember a controversy regarding US का WTO में जाना कि India against India's solar mission because India is taking up most of the photovoltaic cells. So हमें वो controversy is not my subject, but you should know this India's solar energy project. India's solar energy project is supported by United Nations Environment Program, India's United Nations Environment Program under Indian Solar Loan Program. United Nations ने एक स्पेशल प्रोग्राम इंडिया के लॉन्च किया that is Indian Solar Loan Program. Indian Solar Loan Program. Next, Solar Loan Program. India is also a home
to world's first and only 100% solar powered airport. India is also home to world's first and only 100% solar powered airport, that is Kochi Airport. Kochi Airport, Cochin, Kerala. 100% solar powered railway station. 100% solar powered railway station, Guwahati, Assam. And world's largest floating solar power plant. This is this year itself. India's world's 100% floating solar power plant at Wayanad in Kerala. At Wayanad in Kerala. Wayanad in Kerala. Fine. National Solar Mission. National Solar Mission is one of the subcomponent of National Action Plan on is one of the submissions of National Action Plan on Climate Change. National Action Plan on Climate Change. National Action Plan on Climate Change, which has another component such as कौन से हैं? Can you tell me? National Solar Mission. Second, National Mission on Enhanced Energy Efficiency. National Mission on Enhanced Energy Efficiency. BEE rating हमने कर लिया. Chiller Index. Energy Efficiency. Third, National Mission on Sustainable Habitat. पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है इस पे. UN Habitat. National Mission on Sustainable Habitat. Fourth, National Water Mission. National Water Mission. Aim is 20% increase in 20% increase in water use efficiency. Water use efficiency, 20% increase in the water use efficiency. Next, National Mission on Sustaining the Himalayan Ecosystem. National Mission on Sustaining the Himalayan Ecosystem. Himalayan Ecosystem. वहाँ पे डालना Project Secure Himalayas. I have done Project Secure Himalayas. Current Affairs. Project Secure Himalayas. Next, National Mission for Green India. National Mission for Green India, हरित क्रांति. National Mission for Green India. दो हरित क्रांति है, एक एग्रीकल्चर का ग्रीन रिवोल्यूशन, ये है ग्रीन इंडिया. एम
to expand the forest cover from present 23%, to expand the forest cover from present 23% to 33%, 23% to 33%, 33%, with the focus on multiple ecosystem services, focus on multiple ecosystem services, comma, carbon sequestration, and emission reductions, emission reductions, emission reductions. Now remember, mark this as a star और ये रिवाइज करके जाना, क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट के चैप्टर में there is no mention of any of the national action plan on climate change, but there is a special focus on national mission for green India, because green corps launch किया था recently government में. So do this very properly, national mission on green India. So इसलिए I am giving you in detail this. It involves enhancing quality of the forest covers. It involves enhancing quality of the forest cover, enhancing quality of the forest cover. Second, increase in the forest cover and ecosystem restoration. Increase in the forest cover and ecosystem restoration. And third, agroforestry, social forestry, agroforestry, social forestry. And fourth is promoting alternative fuel energy, promoting alternative fuel energy. अल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी, इसको क्या दूसरा नाम है? दिस यू नो, उसका नेम ग्रीन इंडिया मिशन. क्यों न्यूज में है? पार्लियामेंट्री पैनल सेड कि आउट ऑफ ऑल द 8 मिशंस इसमें सबसे कम फंड्स है. दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज, ग्रीन इंडिया मिशन. फाइन. सो 4 ये रिमेंबर याद करना. देखो पहले 3 बहुत आसान है, रिस्टोरेशन, इंक्रीज, सोशल फॉरेस्ट्री. चौथा है अल्टरनेटिव फ्यूल. एग्जाम में दिमाग चलेगा अरे फ्यूल क्यों, लकड़ी तोड़ के थोड़ी फ्यूल लेना है, बट नहीं, इट इज एन अल्टरनेटिव फ्यूल. फाइन. नेक्स्ट कितने हुए हमारे? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. In this, the focus is on making the agriculture more productive, comma sustainable, comma remunerative, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? इट इंक्लूड्स, ये कॉमन लाइन है, सस्टेनेबल, रेन्यूमरेटिव, प्रोडक्टिव. इट इंक्लूड्स. नाउ टेल मी, वाटर यूज एफिशिएंसी होगा इसमें, सॉइल हेल्थ होगा इसमें, वर्मी कंपोस्टिंग मल्चिंग होगा इसमें. सो वर्मी कंपोस्टिंग मल्चिंग विल कॉल इट एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग. इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड और कंपोजिट फार्मिंग. सेकंड, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट. सो कौन सी स्कीम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए? किसान
क्रेडिट कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड? सॉइल हेल्थ कार्ड. नेक्स्ट, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स. सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, इसमें क्या क्या आएगा? मल्चिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, नीम कोटेड यूरिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब कुछ आएगा इसमें. एंड फोर्थ, efficient water management technologies or practices. Efficient water management practices, that is in the bracket. Promotion of drip irrigation, sprinkle irrigation. And last, mainstreaming rain-fed technologies. Mainstreaming rain-fed technologies. Mainstreaming rain-fed technologies मतलब rain-fed regions जहाँ पे irrigation नहीं है. The agriculture is rain-fed technologies. Technologies. इसका in simple word it means जहाँ पे irrigation facility is not available, वहाँ पे bunds, watershed management वो सब करके you give water. बट देखो कहाँ मिस्टेक करोगे, यूपीएससी इसमें से देगी मेकिंग क्रॉपिंग पैटर्न मोर एफिशिएंट. नहीं मेंशन है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, नहीं. सॉइल के बारे में मेंशन है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के बारे में मेंशन है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के बारे में मेंशन है, एंड इरिगेशन के बारे में मेंशन है. देयर इज नो मेंशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. डू द कीवर्ड्स बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन. फाइन. एंड लास्ट, एट्थ इज कोई खास नहीं है. द नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज. नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. What is Green Climate Fund for? To fight the climate change from the developed nations to the developing nations. Fine. Ab in the Paris Agreement, there is a pledge by the developing countries that yes, we are going to reduce our greenhouse gas emissions by this percentage. Fine. Paris Agreement is not binding, but एक बार आपने commit कर दिया तो it is binding. Remember, NDCs are legally binding. ये याद रखना. And they will be revised after every 5 years. So Paris Agreement 2018 से start हुआ, 2016 में it came into force, 2018 से implement हुआ. So it will be revised after, ये जितने भी targets है, they will be revised in 2023. But whether the country has really followed the commitments or not, कि उसने सच्ची में 33% greenhouse gas emissions कम किए, उसने सच्ची में 40% of the electricity has been created by the non-fossil fuels, it has to be measured. एंड मेजरमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे होने चाहिए. सो डेवलपिंग कंट्रीज से कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसे नहीं है, गिव अस मनी. मनी व्हेन इट कम्स फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, ग्रीन क्लाइमेट फंड. व्हेन इट कम्स फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेजर वेदर द पेरिस एग्रीमेंट का कमिटमेंट्स हैव बीन मेट और नॉट, इट इज नोन एज कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंसी फंड. So, means what is this? कुछ नहीं, climate change के नाम पे it is all about money. So, in the Paris Agreement, a new fund was launched.
for 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 transparency, for transparent reporting, for the transparent reporting of nationally determined contributions commitments, known as for nationally determined commitments known as capacity building initiative for transparency, known as capacity building initiative for transparency, CBIT fund, capacity building initiative for transparency fund. In this fund, पार्टीज किसके? पेरिस एग्रीमेंट के। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन आना बाकी है, इसलिए आई एम गिविंग यू टेक्निकल लैंग्वेज ओनली। पार्टीज एग्रीड टू हेल्प नॉन एनेक्स 1 पार्टीज, मतलब डेवलपिंग नेशंस। पार्टीज एग्रीड टू हेल्प नॉन एनेक्स 1 पार्टीज by giving funds, underline एक word non annex 1, मतलब developing nations, by giving fund, underline the next word fund, to help strengthen the institutional and technical capacities, of non-annex 1 countries, for their transparent reporting, of NDCs in Paris Agreement, So what is CBIT? In simple words, exam के लिए a fund given by developed nations to the developing nations so that our institutions will have capacity so that we can monitor कि whether we have met the Paris का commitments or not. Otherwise हम तो ऐसे ही बोल सकते हैं हमने तो 33% किया। So और in non technical terms, ये जो आजकल LED वो सब दिख रहा है कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, इतना ये है, वो भी बाहर के पैसों से आया है, and that is this. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम सफर, बट फंड कौन कर रहा है? CBIT। ये जो ट्रांसपेरेंटली हम सफर के अंदर देख रहे हैं कि कितना पोल्यूशन है सिटी में, कितना नहीं है, उसके लिए भी इंडिया एंड चाइना सेज कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, गिव अस मनी। वो मनी जब आता है, इट इज CBIT। नेक्स्ट, ग्रीन क्लाइमेट फंड। It was established by UNFCCC in 2010 to assist developing nations in adaptation and mitigation practices, for climate change, In the Green Climate Fund, developed countries agreed to give $100 billion per year
$100 billion per year, 2005 to 2015 to 2020, मतलब टोटल कितना, $500 billion to developing nations and LDCs. LDCs मतलब least developed nations. By 2020. Current issue, current affairs. The states of Andhra Pradesh, Maharashtra and Orissa. The states of Andhra Pradesh, Maharashtra and Orissa got 43 million under the Green Climate Fund. Got 43 million under Green Climate Fund. इसलिए ये न्यूज़ में है. To fight or to enhance and mitigate the impact of climate change. Impact of climate change on coastal communities. Coastal communities, comma, save the mangroves, coral reefs and salt marshes. Mangroves, coral reefs and salt marshes. ये इतना important नहीं है, important है background. What is Green Climate Fund? Where is the headquarter of Green Climate Fund? Where? I forget the spelling, so let me check the spelling. Korea, obviously South Korea, North Korea में नहीं. किलापति रामाकृष्णा is the head of strategic planning of the Green Climate Fund. इसलिए कहाँ पे आया पैसा आते ही? इंडिया में. Who is the head of strategic planning of the Green Climate Fund? An Indian. So जैसे ही पैसे आए $60 million, उसमें से 43 in India. कि बाकी के सारे जो गवर्निंग बोर्ड में है, दे ऑल आर यूरोपियंस, जो यूज नहीं कर सकते. चाइनीज एक भी नहीं है. दिस इज हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क. मतलब